We are starting with lecture number 2 of O-level maths, and we are going to continue with some percentage questions. Let's read this question. It says a company manufactures biscuits. So that's the company that makes biscuits. One batch of biscuits contain 300 grams of dried fruit. This consists of sultanas and currants with masses in the ratio 2:3. So these are two different kind of dry fruits, and they are two different kinds of what you call dried grapes, sultanas, currants. Find the mass of sultanas. That is the first part. Now this question is about percentages. That is the first thing. So let's get started with this. 300 grams of dried fruit. So this is question number 2, part A. Total is 300 grams. And it's in a ratio sultanas and currants 2:3. Sultanas is to currant, that is 2:3. That means sultanas are 2 out of 2 plus 3. That is 2 out of 5. And currants are 3 out of 2 plus 3. That is 3 out of 5. So 2/5, or if I want to talk about percentage, 40% is sultana and 3/5 or 60% is currants. So they are asking about sultanas. So therefore, 2/5 of 300 grams, that's 2/5 of 300. So that is 2/5 into 30 into 10. And this is 5 ones, 5 sixes, 2 into 6 is 12, 12 into 10 is 120 grams. That is how much is sultanas in this particular biscuit. That is the first part. Now let's move on. Now it says the mixture used to make one batch of biscuits has a mass of 18 kg. The mixture loses. So now let me underline it a bit. One batch of biscuit has a mass of 18 kg. The mixture loses 12% of its mass when it is cooked to make the biscuit. That means it might be water and the water evaporates. Calculate the mass of one batch of biscuits, and each biscuit has a mass of 12 grams. One batch of biscuit is put into packets. Each packet contains 16 biscuits. How many packets can be filled and the number of biscuits remaining? Now, this is a standard question regarding everyday maths. So let's get started with this. So first and foremost, we can talk about 18 kg. So now we can start over here, part B. 18 kg is actually 18 into 1000 grams, which is 18,000 grams. That is the first thing. It says 12% of its mass is lost. So we will say 12% of the mass is lost. So therefore, how much remains? So 12% is lost. Therefore, 88% remains. Let's use the calculator. 88% of 18,000 kg. So let me get rid of the zeros. These two zeros, they disappear. 88 into 80. 88 multiplied by 180. That comes out to be 15840 grams. This is used for making biscuits. Now it says calculate the mass of one batch. So this is the mass of one batch. It could be in grams. It could be 15.84 kilogram. Both units are acceptable unless they have specified anything about it. They have not. Each biscuit has a mass of 12 grams, and one batch of biscuit is put into packets. Each packet contains 16 biscuits. That means if they talk about a particular pack of biscuit, so this is a pack of biscuits with 16 biscuits in it. So 16 biscuits
multiplied by 12 grams. So 16 multiplied by 12, that comes out to be 192 grams. This is one pack of biscuits. And there are 15,840 grams. So 15,840 divided by 192, how much is that? So 15840 divided by 192, that comes out to be 82.5 value. That means 82 packets will be made and half a packet remaining. That means 8 biscuits, because this is half packet remains. What exactly are they asking for? They are asking how many packets can be filled and the number of biscuits remaining. So this 0.5 multiplied by 16, that is 0.5 into 16. That is why this is half packet. Now let me explain this question again. It's a very nice question. I love this question. It says 18 kg or 18,000 grams. That is the total batch. That is the total amount that you have at the beginning. It has 18 kg. 12% is lost. It evaporates. It would be water. So 12% is lost. 88% remains. 88% of 18,000 is 15,840 grams. It can also be written in kilogram. A packet of biscuit contains 16 biscuits. Okay? I'm just overdrawing it. So there are 16 biscuits in it. Each biscuit weighs 12 grams. So this is one pack of biscuit weighs 192 grams. So this is the total. Divide by 192. That is 82.5 packets. So this is 82.5 packets. So this is 82 full packet. You cannot sell half a packet. So half pack of 16 is basically 8 biscuits. So 8 biscuits remain and 82 packets have been filled up. Okay. Now let me add a page more. Not this question. This question I need to again fill it up because there is the last part that is remaining. Okay, now let's read the last part. It says, not the last part, the third part. Now it says this one. The total mass of each packet, including packaging, is 201 gram. So the biscuits in a pack, they were 192 grams. Biscuits plus packaging, that is 201 grams. Therefore, the weight of packaging, the mass of packaging, the correct term is mass. The mass of packaging is how much? That is 9 grams. What is it asking for? Express the mass of packaging as a percentage of the total mass. So mass of packaging goes at the top, total goes at the bottom, multiplied by 100. So let's do the calculation. 900 divided by 201. This comes out to be 4.477. Round it off, that is 4 significant figures. Therefore, when you round it off, that is 4.48%. That is the answer. And I'm just taking a break for azan. अच्छा जी, so हम लोगों ने ये वाली percentage निकाल ली. Express the mass of the packaging as a percentage of the total mass. तो basically ये numerator है, ये denominator है. ये रहा numerator packaging, ये है denominator, ये है original. इन दोनों की basis पे इसको divide किया, multiply by 100 किया, accuracy का ख्याल रखा, 3 significant figures, final answer, and that is what you get. अब आ जाए part C पर. Part C में क्या कह रहे? A trader sells 1 packet of biscuits for 80 cents. He makes a profit of 25% of his cost price.
सो पार्ट सी, जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो है 80 पैसे 80 सेंट्स, एंड उसका फायदा हो रहा है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। कैलकुलेट द प्राइस ही पेड फॉर अ पैकेट। अब आप सीधा सीधा रेशियो मेथड कर ले। दिस इज केस नंबर 3। सो जब आप केस नंबर 3 की बात करेंगे, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। अगर जो 100 वाली चीज है वो सेलिंग प्राइस में 125 की बन जाएगी बिकॉज ऑफ 25% इंक्रीज। इसका मतलब है जो चीज आपके पास है एक्स की, वो हो जाएगी 80। ठीक है। सो जब आपके पास एक्स वाली जो चीज है वो 80 हो जाएगी, that means it's a scenario of case number 3, ratio proportion से आप निकाल लेंगे। So therefore 80x into 125, that is 80 into 100. Let's use a calculator. So that is 80 into 100 divided by 125. This comes out to be 64. तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 64 सेंट्स। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस वन। आराम से एक मर्तबा देख लो। चलो अगले पार्ट में जाते हैं। It says 2 varieties of tea, high blend and normal blend, are made by mixing grade A leaves and grade B leaves. In high blend, the ratio of masses of grade A leaves to grade B leaves is 3:2. अच्छा जी, अब यहां पे बात हो रही है हाई ब्लेंड की। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हाई ब्लेंड। हाई ब्लेंड, grade A leaves to grade B leaves is 3:2. Find the mass of grade A leaves used in making 250 grams of high blend. ये पहला पार्ट। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दिस इज पार्ट ए पार्ट 1। तो पार्ट ए है और पार्ट 1 है। हाई ब्लेंड की बात हो रही है। इसमें ए और बी का रेशियो है 3:2। हाई ब्लेंड में ए इज टू बी, दैट इज 3:2। और 250 ग्राम्स में से ग्रेड ए कितनी होगी? तो ग्रेड ए जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 5 है, ग्रेड बी जो है वो 2 डिवाइड बाई 5 है। So 3/5 of 250, that comes out to be 150 grams. This is how much is required of grade A leaves. ठीक है, तो grade A leaves की जरूरत है for making high blend tea. ये हो गया पहला पार्ट। अब आ जाए पार्ट 2 में। If 1 kilogram of normal blend, अब ये normal blend की बात कर रहे हैं। 1 kg of normal blend is made by using 450 grams of grade A leaves. Find in its simplest form the ratio of grade A to grade B leaves in normal blend. Give your answer in the form m:n, where m and n are integers to be found. अच्छा जी, अब इस वाले पार्ट पर आ जाए। तो इस वाले पार्ट की जब हम बात करेंगे, ए के पार्ट 2 की बात करेंगे, तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ब्लेंड की। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स में से ग्रेड ए जो है वो 450 है। सो ग्रेड ए जो है वो 450 है। सो नेचुरली ग्रेड बी जो होगा वो 550 होगा। सो देयरफॉर ए इज टू बी, दैट इज 450 इज टू 550। आप इसको 11 से डिवाइड करें, बल्कि आप डिवाइड करेंगे 5 से, 50 से। सो 5 9s are 45, 5 11s are 550, 50 into 9 is 450, 50 into 11 is 550। आपने डिवाइड किया, टुक टुक करके करें, एक झटके में करें, दैट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है, अगर आप एक झटके में करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले दोनों जीरोस को कैंसिल कर ले, तो ये हो गया 45 is to 55। अब आप आ जाए 5 9s are 45, 5 11s are, so this is in the ratio of m is to n, where m and n are integers। अब क्या पूछ रहे हैं, ए का पार्ट 3। Now it says, अब आप इसको मिक्स कर रहे हैं किसके, 250 grams of high blend, 250 grams of high blend, एक मिनट रुकिएगा, ये 250 grams of high blend
is mixed with 1 kg of normal blend. अब high blend और normal blend आप इनको mix कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है? Calculate the percentage of the mass of this mixture that contain grade A leaves. अच्छा जी, अब आप बात करें कि आपके पास क्या रेशियो चल रहा है. So this is A part 3. देखें, आपके पास नॉर्मल ब्लेंड में 450 ग्राम्स है और 550 ग्राम्स. 450 ग्राम्स 550 ग्राम्स, ये आपका रेशियो चल रहा है. अगर मैं हाई ब्लेंड की बात करूंगा तो 250 ग्राम्स में 3:2 चल रहा है. इसकी साइड पे वर्किंग करें. नॉर्मल ब्लेंड जो है वो ये है और 250 ग्राम्स ऑफ हाई ब्लेंड है. 250 grams of high blend. This is 1 kg. This is 1000 gram. This is 250 kg. ठीक है, 250 grams. So this is A कितना है? A इसके अंदर है 150 grams. ये आपने निकाला हुआ है. तो 250 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे. So this is 100 grams. बात समझ में आ गई? आराम से देखें. ये आपके पास 1 kg था, 1000 ग्राम. 1000 ग्राम में से 450 ब्लेंड ए है, 550 एस ब्लेंड बी. और हाई ब्लेंड जो है वो 250 ग्राम में से 150 इधर आ गया, 100 इधर आ गया. अब क्या होगा? अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 450 प्लस 150 दिस इज 600 ग्राम्स और इसको ऐड करूंगा 550 प्लस 100 दैट इज 650 ग्राम्स. अब आपको क्या चाहिए? इसको चाहिए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ दिस मिक्सचर व्हिच कंटेन्स ग्रेड ए लीव्स. तो मास ऑफ दिस मिक्सचर में 600 goes at the top, 1250 goes at the bottom. 600 और 650 ऐड किया, multiplied by 100. Use a calculator and that will be your answer. तो पहले जीरो से जान छुड़ा लें. So that is 600 into 100. बल्कि कैलकुलेटर में है तो वैसे भी कर सकते हैं. 600 into 100 divided by 1250. This comes out to be 48%. That is grade A leaves in this mixture. ठीक है, ये जरा व्हाट्सएप पे एक्नॉलेज कर लें, यस लिख दें इफ दिस मेथड इज ऑल क्लियर. फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में जाएंगे. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. अब हम आखिरी पार्ट पर आ गए. व्हाट डज इट से? इट सेज ड्यूरिंग a sale, a shop sold packets of tea for 20% less than the price shown on the labels. यानी डिस्काउंट दे रहे हैं. Elizabeth and Peter each bought a packet of tea in the sale. अब ये दो अलग अलग लोगों की कहानी. Elizabeth की कहानी में the label price is 4.5. How much did she pay? तो जब हम Elizabeth की बात करेंगे तो Elizabeth जो है B के पार्ट 1 में, ठीक है, इसने $4.50 ये लेबल की प्राइस है, 20% लेस है. रेशियो मेथड से करना है, रेशियो मेथड से कर ले, जैसे भी आपको चाहिए. ओरिजिनल फाइनल. ओरिजिनल 100 है, 20% के बाद 80 हो गया. ओरिजिनल 4.5 है, ये हो गया y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y into 100 is 4.5 into 80. So therefore y जो है वो हो गया 80% of the original price. 0.8 into 4.5, that comes up to be $3.60. This is how much Elizabeth would be paying. अच्छा जी, दूसरे पार्ट में आ जाए. Peter paid 6.20 for his packet. Calculate the price shown on the label. अब जब हम पीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, I think I got on the wrong footing. तो ये वाला जो है ये परसेंटेज का ये रहा, ठीक है. जो पीटर है बी पार्ट 2, इसकी लेबल प्राइस अननोन है, इसकी ओरिजिनल प्राइस इज अननोन एंड पीटर पेड 6.20. 6.20 इज द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. इसमें भी 20% की ही कहानी है, इसमें भी यही लिखे ओरिजिनल फाइनल. ओरिजिनल 100 का है, फाइनल 80 का है. ओरिजिनल अननोन है, ये W लिख देते हैं. फाइनल जो है वो 6.20 है. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, W into 80 is 6.2. Use a calculator. 0.20 into 100, which is 620 divided by 80.
That gives you the answer, $7.75. This was the price on the label. This is the price that Elizabeth paid. ये है paid after discount. So that finishes today's lecture. And we did many more questions involving ratio and proportion and percentages. And that kind of completes this first chapter. In the next class, we'll be starting a new topic related to arithmetic. Take care. Allah.